are doing in the lectures? मैम सच बोले तो वी आर ट्राइंग टू चेंज आवर फैकल्टी, जो नहीं हो रही है। बाकी लेक्चर में कुछ नहीं कर रहे हैं। और वो भी नहीं हो रहा है, फैकल्टी भी चेंज नहीं हो रही है, और वो बोलते वो समझ में भी नहीं आ रहा है। So you have talked to your CC? एचओडी से भी बात कर ली है। Then what is the solution? सर ने बोला कि सर उन्होंने वो सर से बात की है, पर कुछ लग नहीं रहा की है, क्योंकि सर की सिचुएशन पहले जैसी ही है। Okay. तो फिर मतलब लेक्चर्स में कुछ नहीं कर रहे हो तुम लोग? हाँ, अगर इन शॉर्ट पूछे तो हाँ, कुछ नहीं। Okay. So I have shared the link of Google Drive with you. Have you seen? यस मैम। Okay. So आप लोगों ने अपने 2 प्रैक्टिकल्स बना लिए? Like we haven't uploaded yet because we thought we need to just make a folder, so we'll upload it if we have. Okay, I had given a format for your document in that drive also. You will just download that document and make your documents in that format only. Okay, so just check it over there. I had uploaded over in the drive as well at Google Word document is there. So check the document, use that formatting for your files, and make sure by end of today you all will upload your documents over there. Is it clear, everyone? Yes. Yes. And today is the only deadline I am giving right now, because in the last lab also you didn't done any of the practical. First भी नहीं किया था आप लोगों ने, और second भी कर लेना चाहिए था आप लोगों को, आपने कोई भी नहीं किया है. But today is the last day I am giving to you. You have to upload your documents over there, otherwise I'll not take it. First 2 practicals. I hope I am clear to you. Great. So if you have any doubt regarding that, then you can ask first. I am shared the format. I had shared the link as well. So you just make sure you will create your folders by over there in the link by your name and enrollment numbers and your division only. And also in the email I had written all the instructions also, so that you would be clear with that. And for the formatting I had shared one of the format with you in that drive also. So check both of the things and do the needful. Ma'am, we have done only one practical. Then what about the second one? We just installed Veka in the last lab. We have Yes, not then done you have, anything and else. this is the second practical actually. Installing Veka. Yes, So okay, so you what have we need to upload in that? you have to make a document check-in experiment, like step-by-step document installation of Vika. Okay. This is the second practical. You will check in the format. I had listed out the list of practicals over there. So now we have to uninstall it again. No, I told you in the last lab that you will find a Now YouTube we have to video of again there. like Then over there you can ma'am, take the for capturing the screenshots. snapshot, Yes, you will for take this. capturing the snapshot, we have to uninstall it now. अरे बच्चे, आपको YouTube से जो वीडियो मिल जाएगा उसमें से आप कैप्चर कर सकते हो स्क्रीनशॉट. पोस्ट करो, कैप्चर करो. Okay, ma'am. Okay. Yes, anyone else?
मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप लोग आधी बातें सुनते हो क्लास में, काम की बातें तो सुनते ही नहीं है, जबकि लास्ट लेक्चर में ये सब इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी मैंने दिए आप लोगों को। आप लोगों को ये भी नहीं पता है कि वेका इंस्टॉलेशन यूज अ सेकंड प्रैक्टिकल। वेरी गुड। देखो, बाकी बातें अलग हैं, that was a part. If you are not if you are not good at your work, nothing is here. I will not entertain anyone. Make sure you will be very good and very okay with your work. बाकी सब साथ साथ is acceptable, otherwise it is not. Okay, I hope everybody has installed Veka in their systems. Yes, whosoever in the last lab was not their laptops have installed Veka. Yes, Jamin, Darshita, Akshay. यस मैम मेरा हो गया। Okay, okay. Darshita, Yes, ma'am. done. Everybody have. Akshay, no. Why? Yes. Need to attend replacement talk. Signing off, ma'am. श्लोक, ओके। कौन सी टॉक है आज आप लोगों की? किसी और को भी जाना है उसमें? अक्षय, व्हाई हैड यू नॉट डन? अभी कर रहा हूँ, डाउनलोड हो गया, इंस्टॉल करना बाकी है, सिर्फ 2 मिनट में हो जाएगा। हाँ, डू इट। Yes, anyone else whosoever is not done? Okay, so just open your systems. So today, firstly, I just want to discuss here is that is your pre-processing. If you were aware about the data mining, data warehouses, then if you remember when we were talking about the data warehousing, we collected the data, we cleaned the data, and then we integrate the data into the data warehouse. हम data collect करते हैं, उसे integrate करते हैं data warehouse में after cleaning, after transformation, after the things that make it suitable for work, right? तो when we are taking data, अब जो हमारा data set है वो हमें कहाँ से मिलेगा? What should be the feature or the function, the attributes your tuples of your data have? What kind of data your Veka is accepting and what kind of data you can work in data mining? अब जब हम डेटा सेट की बात करते हैं तो सबसे पहले आज हम यही सीखने वाले हैं कि कैसा डेटा होता है, कौन से डेटा सेट पे आप काम कर सकते हो, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं आपके डेटा सेट में, that we will going to discuss today, right? And this is your pre-processing step we are starting with. Pre-processing, when we are saying that, we are actually pre-processing contain 4 steps: data cleaning, data transformation, data selection, and data integration. These 4 steps are the pre-processing steps. When somebody asks you or in the examination also, if question asked, then write the pre-processing steps. Then you have to discuss data cleaning, data integration, data selection, and data transformation. These 4 steps are known as pre-processing of data, right? सबसे पहले हम डेटा को क्लीन करते हैं, उसके बाद डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं, देन उन सबके सब डेटा को क्या करते हैं, डेटा वेयर हाउस में स्टोर करते हैं, दैट इज कॉल्ड डेटा इंटीग्रेशन, right? After integration of data, when we had done the cleaning and transformation part, and then we integrate the data into the data warehouse, then we will select the data for further usage, for applying data mining, right?
Are you getting? Means first step क्या हुआ आपका data cleaning, then we comes to data transformation, then we comes to data integration, then we comes to data selection, right? When we are talking about the data transformation, cleaning तो मैंने आपको पिछली बार बताया ही है कि किसे हम बोलते हैं. When we are saying that data cleaning, then we are looking at data should not be incomplete, our data should be consistent, right? And our data should be noise free. Data should not be noisy. मीन्स कुछ और ऐसा जैसे कि कोई ऐसी वैल्यूज होती हैं, फॉर एग्जांपल लिखा है एज, राइट? यू हैव टू एंटर द एज. इफ somebody, yes, what was the step after data integration? That is data selection. I'm coming over there one by one. I'll give you a brief so that you would be more clear with theory parts as well. First is your data cleaning part, in which we are taking care of the incomplete data, which means if something is missing in the data, missing values, right? Missing values are there, then we will we have some techniques to fill that values, right? Second thing is, then data is inconsistent. Our data should not be inconsistent. I had already given you the example that if some two data sets are there, right, in your databases, two databases are there of same subject, and you have you have the same attribute gender, and in one database the gender values are male and female, and in another database the attributes values are m/f, then data is inconsistent here, that doesn't match, right? So this is the inconsistency. And for example, somewhere the date of birth written 1990, and somewhere in the another data set it is written the age is 20, so it is inconsistent, there is no consistency, right? So data should be consistent, data should be complete, and data should be noise free, means data should not be noisy. Now here noise refers to, for example, you had given a, जैसे कि आप कोई form fill करते हो, then when they ask to enter your age, then you have to enter the digit that is a positive integer, right? लेकिन अगर कोई गलती से -10 लिख दे, that is not a correct value, राइट? सो योर दिस इज अभी करेक्ट वैल्यू नहीं है, बट फिर भी अगर आपका जो फॉर्म है उस फील्ड को एक्सेप्ट कर रहा है, देन योर डेटा बिकम समथिंग नॉइजी, दैट इज समथिंग रैंडम वैल्यूज. When we are saying that the data is noisy, it means some random values are there which has no meaning over there. Now when you will when you are doing anything over, when you are applying any algorithm, any technique over the noisy data, the results would not be appropriate. सो योर डेटा शुड नॉट बी नॉइजी, मतलब कुछ भी रैंडम नहीं होना चाहिए. कुछ भी रैंडम को अगर आप ऑब्जर्व करोगे, एनालाइज करोगे, द डिसीजन यू हैड मेड टेकन फ्रॉम दैट डेटा इज नॉट करेक्ट. यू नो दैट रैंडम वैल्यूज को लेकर कुछ भी आप डिसीजन मेकिंग पे नहीं आ सकते हो. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डेटा क्लीनिंग पार्ट, these three things should not be there. Your data should not be incomplete, your data should not be inconsistent, and your data should not be noisy. Correct? This is your first step for pre-processing. Coming to the second step, it is data transformation. Now, when we are talking about data transformation, this is the, हम जब बोलें कि हम एक डेटा को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, like when I am talking, I had given a set of range. For example, I had a okay, I had an attribute salary, and maybe the values lies between salaries 50,000 to 1 lakh. Now to handle or to manage this data, these digits is difficult for us, is difficult for me for now. So when I am managing this data set, these values are not up to the mark so that I can manage, because the digits are very large. That is 50,000 to 1 lakh, means the values lie between two more than 5 numbers, right? So 5 digits, more than 5 digits are there. So what I am doing, I will I will transform the digits into a given range. एक किसी particular range में मैं given range को कन्वर्ट कर देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल आई विल ट्रांसफॉर्म दैट रेंज इनटू 0 to 1. अब जो भी नंबर होगा वो 0 to 1 के बीच में लाई करेगा. द वैल्यू आई विल transform every value between 0 to 1. You will, in the lectures you will get to know that there are 3 techniques you will going to use, that are the numerical part or data transformation, right?
then how you will convert your data from one range to another range, that is called data transformation. जब हमें हमारा जो actual data है वो suitable नहीं लगता है, manage करना correct नहीं, easier नहीं लगता है, then we will going to transformation. Remember, data transformation is not mandatory. If it is required, then we are doing that. Are you getting? When somebody is asking you data transformation is a mandatory step, no, it is not. Data transformation we are doing for our easiness, for our convenient. It is not a necessity कि आपको डेटा ट्रांसफॉर्म करना है तभी आप आगे प्रोसीड कर सकते हो. नो, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स दी हैं, आप डेटा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में. What is the requirement of doing data transformation? Because data is not manageable in the given format. आप डेटा को यूज नहीं कर पा रहे हो गिवन फॉर्मेट में, फॉर एग्जांपल डेटा आपका यूज नहीं हो पा रहा है गिवन फॉर्मेट में, देन यू आर यूजिंग डेटा ट्रांसफॉर्मेशन. ऑल्सो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, इफ यू कैन सी दैट, आप लोगों ने कंप्यूटर से भी बहुत बार किया है, वी हैड मल्टीपल एक्सटेंशंस ऑफ द फाइल्स गिवन, राइट? दिए होते हैं हमें. एक्सेल में भी हम अगर बात करें तो वी हैड एक्सेल फाइल्स विद एक्सटेंशन. व्हाट आर द एक्सटेंशन ऑफ द एक्सेल फाइल्स? Excel SPSS. Yes. Another extension. Then binary workbook are there, so it's an extension. Then simple workbooks. There are many of them. One more is there. If you had heard about that, it is your CSV files. Have you heard about CSV files for Excel? No. Okay. So we will talk about this also. जब हम बात करते हैं डेटा ट्रांसफॉर्मेशन की, it is doesn't mean when you are changing the numeric part only. If you are transforming the data at any form, one form to any another form, that is called data transformation. जैसे कि हम अपना डेटा जब मेल करते हैं, for example, I want to mail something, and in the email options we don't have that option that we can transfer a folder, मतलब the data which is more than 25 MB, I think. So one limited MBs are there given for exchange of data. तो हम क्या करते हैं, ईमेल में अगर अटैच करते हैं फोल्डर्स को, तो जिप फोल्डर्स बना के, मीन्स फाइल को कंप्रेस करते हैं और फिर सेंड करते हैं. दैट इज ऑल्सो कॉल्ड डेटा ट्रांसफॉर्मेशन. यू आर चेंजिंग द डेटा फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. यू आर चेंजिंग दैट डेटा. आप फॉर एग्जाम्पल किसी डॉक्यूमेंट को किसी पीडीएफ में कन्वर्ट कर रहे हो, या फिर आप किसी फोल्डर को जिप में कन्वर्ट कर रहे हो. दिस इज यूर डूइंग डेटा कंप्रेशन. दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेटा यू आर डूइंग, right? So transformation is not necessary. If it is required, you can do that. So this is the second step for data pre-processing. Coming to the third part, that is your data integration. This is none else than you are integrating the clean data over in the data warehouses. आप डेटा क्या करते हो, क्लीनिंग और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, एक्चुअली जो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन स्टेप है, आप डेटा इंटीग्रेशन से पहले भी परफॉर्म कर सकते हो और डेटा इंटीग्रेशन के बाद भी परफॉर्म कर सकते हो. Are you getting? Data cleaning is the first step. After that, either you can transfer and place it into the data warehouses. Either you can integrate the data first into the data warehouses, then you can perform data transformation, right? Then डेटा ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा नहीं है कि आपको अभी परफॉर्म करना है. बिफोर इंटीग्रेशन यू कैन परफॉर्म इट, एंड आफ्टर इंटीग्रेशन यू कैन ऑल्सो परफॉर्म डेटा ट्रांसफॉर्मेशन. करेक्ट? सो डेटा इंटीग्रेशन क्या है, एक्चुअली आपका डेटा क्लीन करने के बाद आप जब स्टोर करते हो डेटा वेयर हाउस में, दैट इज कॉल्ड डेटा इंटीग्रेशन. करेक्ट? कमिंग टू द फोर्थ स्टेप, दैट इज डेटा सिलेक्शन. अब ना तो आप क्लीनिंग से पहले डेटा सिलेक्ट कर सकते हो, ना ही इंटीग्रेशन से पहले डेटा सिलेक्ट कर सकते हो, और ना ही ट्रांसफॉर्मेशन से पहले डेटा सिलेक्ट कर सकते हो. दैट वुड बी for sure. Data selection means when your data is ready for usage for applying any of the algorithm, that is called data selection. For example, in data warehouse you have abundance of data available with you, but everything you are not going to use for your project, for your analysis. So data selection is selecting that appropriate data, selecting the part of data from data warehouse on which you are going to apply any data warehousing technique, or any any algorithm for analysis. That is called data selection. Is it clear? These four steps.
Any doubt over here in these 4 steps? With every lab session, I'm just trying to cover your theory part as well, so that you will get a basic idea what these terms mean, and you will able to understand better. Okay, so this is data pre-processing actually. So your third and fourth practical is based on data pre-processing. That's why I discussed data pre-processing first. uh, Coming to your third practical, that is you have to generate the data set in Weka. आपको Weka में data set generate करना है. हम data set generate करने से पहले we should discuss which kind of data we are using and which kind of data we can use in the uh, project, in the machine learning और data mining. आपके पास जो भी डेटा होता है, आपने अगर देखा होगा तो कौन कौन से डेटाज आप लोगों ने अभी तक यूज किए हैं फॉर एनी ऑफ द प्रोजेक्ट यू आर मेकिंग, फ्रॉम वेयर यू आर गेटिंग डेटाज? Yes, anyone? In the 7th semester, you are doing project right now. Are you doing projects in this semester? So in which domain you are doing? Manually, some of the data is created, some from web, yes. But this is what I am asking, what from where you had taken the data, from wheresoever you had created the data, in which form, in which kind of files you had created, or in which of types of files you had taken from web. Either they are documents, either they are Excel files, right? Or the if you are making some of the applications for web designing में अगर आप काम कर रहे हो, for example web applications या websites आप बना रहे हो, then the data set you had taken in the form of yes others. बाकी लोग कुछ नहीं कर रहे हैं क्या? JSON, okay. CSV, okay. Utsav, do you know about CSV files? Utsav? Know a little bit. How much? Comma separated values, okay. Can you please let me know what is the difference between the Excel, that normal format that he said, Excel SV, Excel SX and CSV, in the common usable format we are using in Excel. What is the difference between that and CSV? दोनों Excel की फॉर्मेट है, पता है? Okay, okay. So let me show you one thing first, then we will discuss. You worked only with CSV once, okay. Oh, Excel data is stored as file, yes. So when we are talking about that your files or the data formats, there are multiple formats we have for the data.
And basically when we are talking about the storing of data, the name comes in our mind first is Excel. Basically Excel has given you that in the format columns and rows, you are storing your data in the form of Excel files, right? कुछ भी data store करना होता है तो Excel files की form में store करते हैं ना. जैसे कि अभी आप डेटाबेसेस यूज करते हो, फॉर एग्जांपल आप कोई वेब एप्लीकेशन डिजाइन कर रहे हो या फिर कोई वेबसाइट डिजाइन कर रहे हो, उसमें भी अगर आप कोई भी डेटाबेस यूज करते हो, आइदर एसक्यूएल, ओरेकल, एनीथिंग यू आर यूजिंग, ओवर देयर यू आर आल्सो क्रिएटिंग टेबल्स. टेबल्स में भी आपको टपल्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, राइट? दीज आर द थिंग्स. मींस टेबल्स में भी क्या होता है, रो और कॉलम्स की फॉर्म में डेटा होता है. This is what you have in databases as well. So when we are talking about the data, commonly Excel file has come into the picture, that in because it is giving us the uh, one proper format to maintain the data into the form of tables, right? Now when we are talking about, जब मैंने Excel file खोली तो मैंने चीजें लिखी. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको Excel ही खोल दिखाती हूँ. So when we open the Excel file, this is how it look like. There are multiple columns and multiple rows are given. If I want to enter the data of students for your class, either I will write first, right? Then your enrollment number, right? Then the division, right? So this is how we write the data in our files. एक्सेल फाइल्स में डेटा इस तरह से हम स्टोर करते हैं, इस तरह से हम लिखते हैं. अब तो देखो, अब मैंने यहाँ पर फॉर एग्जांपल लिखा कि योर मार्क्स, आपके मार्क्स लिख दिए मैंने. फिर मैंने लिख दिया आप लोगों का कांटेक्ट नंबर, राइट? देन आई हैड रिटन द इलेक्टिव यू हैड टेकन, right? So this is the things I had written here in the file to maintain a data for your class. Now what is this first rows contains? ये जो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, these what it means, इसे हम क्या बोलते हैं? Headings or columns. Headings or columns. Actually, when we are representing these things, these are called attributes, right? In our when we are talking about the data sets, these are called your attributes. Attributes क्या है, मतलब आपका जो data set है उसमें कौन कौन सी attributes available हैं. These are called attributes over here. अब उसके बाद जब हम उसके अंदर data store करते हैं, for example I had written here your names, for example he, Sahil, right, Utsav. These are some names, these are the values of these attributes, right? These are called tuples as well and rows as well. Mainly this is the first row, right? This is the second row, this is the third row or third tuple, and the first row contains the name of the attributes. मतलब पहला attribute क्या है मेरे data set का name, दूसरा क्या है enrollment number, तीसरा क्या है division, right? चौथा क्या है marks, contact number and elective. So these are the some attributes of this file, right? अब मैंने यहाँ पर सब entries कर दी. For example, whatever the data I had written all the data over here. I had written the enrollment number, the division as well, marks for every student, contact number, and the elective they had taken. And I had stored this file, and this file you can see here. This is a format. This is the extension of this file, that is the XLSC. So when there are another format for this Excel file, that is also you can see here. अगर मैं आपको लोगों को यहाँ show करूँ, if you are saving this file, then another format for this file is, that is your CSV. There, that is your comma
separated file. अगर मैं इस फाइल को कॉमा सेपरेटेड फाइल में सेव करती हूँ, then what makes a difference here? So this is your CSV file. अब देखो सबके सब कंटेंट वही है, कुछ चेंज नहीं हुआ है, but the extension has changed. Now what makes a difference in CSV files and Excel files? I'll show you one another file that is a CSV file. It is called comma separated file. If you are able to see this file, then this is a CSV file, right? Uh, I actually we can download this file in the two formats. एक तो simple आपका जो Excel इस format है उसमें भी मैं download कर सकती हूँ और दूसरा CSV में भी download कर सकती हूँ. Actually this is the a little bit big data set, so you can able to analyze this data set. In the CSV files, everything is stored in the form of plain text. If something, you can see that some attribute names are missing over here, only the text box 19 text box are written, some of the attribute names are given over here, right? So whenever you download the CSV files, that is only given into the plain text format, right, which is separated by a comma. And your जो आपका दूसरा excel का format, that is your excel s or excel sx, that is contains the binary data values. उसमें आपको हर एक चीज plain text के format में नहीं आएगी. Now what makes a difference here when you are using Excel? There are two formats you are using. Excel में आपको columns और rows के बीच में data set given है, so you can use that. Now one another format we are using, especially using for machine learning or data mining, that is your ARFF format. That is your ARFF file format. Now what is this ARFF file format? This stands for attribute relation file format. This is called attribute relation file format. अब देखो, अगर मैं आपको क्या करना है, सबसे पहले डेटा सेट कलेक्ट करना है. अब आपको किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करना है, फॉर एग्जांपल यू वांट टू वर्क ऑन स्टॉक प्रिडिक्शंस. तो स्टॉक प्रिडिक्शंस के लिए पहले आपको स्टॉक मार्केट का डेटा चाहिए. अब कुछ भी डेटा तो ऐसा नहीं है जो आप सब कुछ खुद ही क्रिएट कर पाओ, खुद ही जनरेट कर पाओ. तो यू हैव टू डाउनलोड द डेटा, यू हैव टू टेक द डेटा. अब डेटा सेट ऐसे ही नहीं है कि आपने कहीं से भी डाउनलोड किए एंड यू स्टार्ट एनालाइजिंग दैट डेटा सेट. नो, इट इज नॉट. There are some authenticated websites, some authenticated places available for which contains the authentic data set
फॉर डेटा माइनिंग और मशीन लर्निंग। कुछ ऐसे ऑथेंटिकेट वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको डेटा सेट्स मिलते हैं अवेलेबल ऑलरेडी, फ्रॉम वेयर यू कैन डाउनलोड द डेटा सेट whatever the data set you required। मतलब आपको जिस भी पे काम करना है तो जो भी आपको डेटा सेट चाहिए आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। जैसे कि फर्स्ट एक वेबसाइट है आपकी केगल, आप केगल से डेटा सेट्स को ले सकते हो। इफ आई विल शेयर यू दिस wait, I'll show you the data sets। So this is your open data sets available for machine learning and data mining। I already told you machine learning is the subset of your data mining, so you can take the data from here। अब देखो यहाँ पर आपको जो data set मिल रहे हैं, for example there are a lot of datas are available, so whatever the data you want you can either search that data, you can also ये देखो COVID-19 tweets, so this is the data related to the tweets, so from where you can get the data and it's see you can download the data from here, right? There are tasks also given, some things also discussions, activities, and about the data set everything is given here। So there are some authenticated things which are given over here that you can from where you can download your data sets। आपको यहाँ से data sets मिल जाते हैं जिससे कि आप डाउनलोड कर सकते हो, राइट। सो जब हम डेटा सेट डाउनलोड करते हैं, डेटा सेट क्रिएट करते हैं, जनरेट करते हैं, तो देयर आर सम फाइल फॉर्मेट्स व्हिच आर supportable by your data mining or machine learning, and for machine learning and data mining we are using one of the file format that is known as ARFF। अगर अब मैं ARFF फाइल फॉर्मेट आपको इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, why it is so, this is the file format we are basically using for data mining and machine learning। आप इन दोनों पे काम करने के लिए अगर आपको कुछ डेटा सेट चाहिए तो आप इन दोनों के लिए इस डेटा सेट इस फाइल फॉर्मेट का डेटा सेट सिलेक्ट करते हो या यूज करते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको कई बार एक्सेल फाइल भी मिलती है, यू कैन टेक दैट फाइल एंड यू कैन कन्वर्ट द डेटा, दैट इज कॉल्ड डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। यू कैन ट्रांसफॉर्म योर डेटा अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, right? Now what is this ARFF file? Before moving to this ARFF file I just let you know some of the attributes। अब जब हम जो भी एट्रीब्यूट्स यूज कर रहे हैं फाइल में, if I had seen you some of one of the Excel file, आपने कुछ ऊपर titles लिखे which you said that it is these are the headings, actually these are called the attributes। when I said the attributes it means this refers to that things we had used in the first row of the Excel। तो आपके फाइल में कितने एट्रीब्यूट्स हैं, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, ये सब डेटा आपको ARFF फाइल में मिलता है। अब एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, देयर आर सम टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स। तो कुछ एट्रीब्यूट्स के टाइप जिनको मैं आपको इंट्रोड्यूस करती हूँ। कौन कौन से टाइप्स होते हैं, फर्स्ट टाइप ऑफ द एट्रीब्यूट दैट इज योर बाइनरी बाइनरी एट्रीब्यूट्स। बाइनरी एट्रीब्यूट्स की बात करें, द एट्रीब्यूट्स व्हिच कंटेन्स द वैल्यूज इन द जिसमें सिर्फ दो ही वैल्यूज होती हैं जिस एट्रीब्यूट में। जैसे कि मैं एट्रीब्यूट की बात करूं जेंडर, इसमें कौन कौन सी वैल्यूज हो सकती हैं, मेल और फीमेल। जैसे कि हम बात करें रिजल्ट की, देन पास और फेल, ट्रू और फॉल्स। so these are the attributes which contains only two values over there and both the values are equally important, right? जैसे true and false है, 0 और 1 है, मेल और फीमेल है। so binary attributes in which you are having values, only two values are there is called binary attributes। तो जब भी आप एट्रीब्यूट्स यूज करोगे, ये सब मैं आपको क्यों बता रही हूँ कि ARFF फाइल जब आप यूज करोगे या फिर कहीं से भी आप डेटा सेट डाउनलोड करते हो तो आपको वहां पर दिए होंगे कि कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, कौन कौन से टाइप के एट्रीब्यूट्स आप यूज उस फाइल में यूज हुए हैं, आपको कौन से रिक्वायर्ड है। आर यू गेटिंग? सो नेक्स्ट टाइप ऑफ एट्रीब्यूट इज नॉमिनल। Now, when we are talking about the nominal attributes in which the values are given, when we are talking about the values, it means the data it contains. For example, name is the attribute, and values are the names of the students, like he, Sahil, Utsav, whichever I had written in the file. That are the values for that attribute.
So when I talking about the nominal attributes are जिसमें कोई जो वैल्यूज हैं वो कोई कैटेगोरिकल वैल्यूज हों, किसी कैटेगरी को बिलोंग करती हूँ, that can be more than two as well. For example, I had written the name of the colors red, yellow, blue. So this attribute contains only these values, and this is called categorical values. Some category is there. Category is color. You had the color of these three colors are there in, मतलब आपके पास कुछ डेटा सेट है और ये जो एट्रीब्यूट है ये क्या बताएगा आपको कि पूरे के पूरे डेटा सेट में ये सिर्फ ये तीन वैल्यूज ही यूज हो रही हैं कलर के लिए, नथिंग एल्स. दिस इज योर नॉमिनल एट्रीब्यूट इन विच द कैटेगरिकल वैल्यूज आर गिवन. फॉर एग्जांपल आई हैड रिटन रेड येलो ब्लू. दिस इज द नॉमिनल एट्रीब्यूट, राइट. सो इन्हीं तीन वैल्यूज में से कोई वैल्यूज आपकी यूज होंगी, करेक्ट. कमिंग टू द नेक्स्ट एट्रीब्यूट दैट इज योर न्यूमेरिक. कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू हो सकती है, right. So this is the basic attributes you are using in your ARFF files, so you should know about that. Now coming to your ARFF file, when we are talking about I'll show you one format कि आपको ARFF file कैसे होती है. सी आपको जो ARFF फाइल का फॉर्मेट दिया हुआ है, इट इज गिवन बाय द वेका एज वेल. वेका की जो ऑथेंटिकेटेड वेबसाइट है उसमें उन्होंने ही आपको इसका फॉर्मेट दिया है. अब ये फॉर्मेट का कैसी होती है ये फाइल्स, उसका एक ओवरव्यू दिखाती हूँ मैं आपको. दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर गिवन इनटू योर फाइल. ऐसे ही कुछ आपको दिया होता है. if something percentage is there, it means these are the comments. If something is written in the percentage, then it means these are the comments in the file. If something, जैसे कि आप कोड लिखते हो तो उसमें अगर आपको कमेंट लिखना होता है तो कमेंट के लिए क्या करते हो, अगर वन लाइन कमेंट है तो ओनली स्लैश बैकस्लैश यू आर यूजिंग, टू बैकस्लैश यू आर यूजिंग, अदरवाइज slash star, and after the end of that line star slash. This is the way you are adding the comments in the programs, right? Likewise in the ARFF file format, if you want to add any comment in the file, you can use by giving a percentage symbol. So these are the comments. अब जब भी आप कोई भी data set देखोगे, if it is in the form of ARFF, then you will able to analyze it in a better way. अब देखो एक्सेल में भी तो हम यूज कर सकते थे ऐसा, ये सारी चीजें हम ARFF फाइल क्यों यूज कर रहे हैं, you will get to know here the importance of this file. So here in the comment section you can able to analyze the title of the data set is given कि ये data set किसके बारे में है, right. The title is given, it is your iris plants database, करेक्ट. सोर्सेज क्या है डेटाबेस के वो भी दिए हैं कि कौन से उन लोगों ने डेटाबेस को कलेक्ट किया है. एंड यस, नाउ दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ योर डेटा. आपकी ARFF फाइल का स्टार्टिंग है, दैट इज फर्स्ट लाइन सेज दैट एट द रेट रिलेशन आईरीज. सबसे पहले आप जब ARFF फाइल स्टार्ट करते हो देन यू हैव टू डिफाइन द रिलेशन, मींस ये डेटा किससे रिलेटेड है, दैट इज योर आईरीज. यू हैव टू राइट देयर कि आपका जो डेटा सेट आपका है, सो यू विल एबल टू एनालाइज कि व्हाट इज द डेटा अबाउट, is this data is what about, that is called relation, right. So the first line contains the relation of the data कि इस डेटा का डेटा किससे related है, then you can write here, right. So this data is related to the iris, right. Now the iris is here is not your eye. जो आई की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर. iris is one of the flower plant is there, right. So they are taking the example or data set of the iris plant.
कमिंग टू द एट्रीब्यूट्स, तो दीज आर द, अब आपको कोई भी एट्रीब्यूट यहाँ डिफाइन करना है, देन यू विल स्टार्ट विद द @ attribute, right? Then name of the attribute, this is the formatting of your database. जब आप arff फाइल फॉर्मेट खुद क्रिएट करोगे, then you have to write all these things likewise only. सबसे पहले attribute, then name of the attribute, that is your sepal length, जैसे कि हमारी फाइल में क्या था, that is name, right? Then it is numeric, that is the type of the attribute. अब आपका attribute string भी हो सकता है, numeric भी हो सकता है, nominal भी हो सकता है, binary भी हो सकता है. Are you getting which type of attribute you are using? You have to give the data type of the attribute here. Coming to the second attribute, this is the attribute sepal width, and this is also numeric. This is the third attribute, petal length, and this is also numeric. This is your fourth attribute, that is your petal width, this is also numeric. And this is your last attribute, class, and you can see here they had written 3 values here for this attribute, and this attribute is nominal. आपको पूरे के पूरे डेटाबेस में 3 ही कैटेगरीज में वैल्यू मिलेंगी, iris setosa, iris versicolor, iris virgicina. So this is your nominal attribute. You can able to analyze this data set. Now this is the name of the attributes they had given and type of the attributes. Coming to the data of ARFF file look like. So we had started the data with the same format @data. Then we had started to write the data. अब पहली जो रो है, इसको ध्यान से देखो, उसमें क्या लिखा है, 5.1, 3.5, 1.4, 0.2 and iris setosa. इस लाइन का क्या मतलब है, द वे और द ऑर्डर you had written here for the attributes, in the same order the values are given. It means 5.1 defines that it is the sepal length, right? 3.5 defines that it is the sepal width. 1.5 defines that it is a sepal, it's a petal length, and 0.2 is the petal width, and iris setosa is the class. जिस ऑर्डर में आपने एट्रीब्यूट्स के नाम दिए हैं, उसी ऑर्डर में आपको डेटा सेट में डेटा मिलेगा ARFF फाइल्स में. Is it clear? Likewise, the whole data set is given. Now, what is the advantage or what is the good feature of using ARFF files? जब हम Excel यूज करते हैं, तो बहुत सारे, अब ये तो हुए कुछ 3-4 एट्रीब्यूट्स की बात की ना हम लोगों ने. In the data set we have 100 of attributes given. अब देखो, अगर मेरे पास सिर्फ यही डेटा हो, ठीक है, मैंने CSV फाइल में मुझे डेटा मिल गया है, लेकिन इसके जो है एट्रीब्यूट्स मुझे नहीं पता है, देन आई वुड नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज ना कि ये क्या दिया है, कौन सा एट्रीब्यूट है, किस फॉर्मेट में दिया है, इसके कौन से टाइप का एट्रीब्यूट है. आई वुड नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज कि कौन सा एट्रीब्यूट कौन से टाइप का है, कितनी वैल्यूज यूज हो रही हैं. तो डेटा सेट ऐसा तो नहीं है कि सारा डेटा सेट हम खुद क्रिएट करते हैं. वी आर ऑल्सो डाउनलोडिंग द डेटा. आई हैड ऑलरेडी शोन यू हियर इन द Kaggle. You can download the data from there. So you can, if you are downloading any data set from here, then you would able to analyze that. आपको जो data set given होंगे, there are many other websites given for data sets. तो आप कोई भी data sets, यहाँ पे देखो ये डेटा जो है वो CSV फॉर्मेट में आपको दिया है, राइट? यहाँ पे भी आपको डेटा CSV फॉर्मेट में दिया है. सो यू कैन डाउनलोड दिस डेटा सेट एंड यू कैन ट्रांसफॉर्म एज वेल. तो आप जब भी कोई CSV फाइल डाउनलोड करते हो, तो आपको प्लेन टेक्स्ट की फॉर्मेट में डेटा मिलेगा. एंड इफ यू आर, अगर आप प्लेन टेक्स्ट की फॉर्मेट में डेटा यूज कर रहे हो, देन कोई और अगर उस डेटा को एनालाइज करता है, दे वुड नॉट एबल टू एनालाइज, दे वुड नॉट एबल टू get that which attributes you are using and what are the types of that attribute. So ARFF file format provides the all necessary things for the dataset required. Are you getting? So ma'am, where we can create it? Yes. What are you saying here? Ma'am, this file can be created in which software or in which like in Excel we are able to This is what create I'll yes, this ARFF file, I'll let you know how you will create these files. Today you will generate data set. First of all, you have to differentiate ARFF files and CSV files. Why we are using ARFF over CSV files? Now it is clear why we are using ARFF files.
बाकी लोग भी हैं क्या क्लास में? Okay. So this is the file format. Now you are aware about that we will going to use, that is your ARFF file format. Correct. So how you will create that data? Ma'am, why can't we use pandas library of Python? We are not using Python right now, so there is nothing we can use in Python or pandas right here. So before moving to how to create the files, आप ARFF files कैसे create करोगे, कैसे use करोगे, now you are aware about which kind of file format you are going to use for machine learning and data mining. मतलब अगर आप अब कहीं पे भी डेटा सेट अगर सर्च करते हो या डाउनलोड करने की ट्राई करते हो, then you are aware about which kind of data files are available over for the data mining and machine learning. Either they will be in CSV, either they will be in ARFF file format, right? So how you will create that data? Let me show you. Is the Weka will not be shareable? Yeah, it is. So in Weka, we will going to explore Explorer. Is this window is visible to you? Let me check. Okay, only first window is visible. So we will go to Weka Explorer, and after that, what you will going to see here, आपको ये जो दिख रहा है यहाँ पे देखो, पहला स्टेप क्या है, प्री प्रोसेस. इसका मतलब क्या है, जब तक आप प्री प्रोसेसिंग नहीं करते हो, मतलब जब तक कोई डेटा सेट प्री प्रोसेस नहीं होता, यू विल नॉट एबल टू क्लासिफाई द डेटा, यू विल नॉट एबल टू make the clusters of data, you will not able to associate any data, and you will not able to visualize as well. मतलब प्री प्रोसेसिंग इज द मैंडेटरी स्टेप ओवर हियर. आर यू गेटिंग? अब प्री प्रोसेसिंग का मतलब समझ में आ रहा है आपको कि प्री प्रोसेसिंग का मतलब क्या है? वी हैव टू generate data set, we have to create data sets, we have to take any data set from anywhere. That is the pre-processing part, right? So जब तक आप प्री प्रोसेस नहीं करते हो कुछ भी डेटा को, तब तक आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हो. तो फर्स्ट स्टेप इज योर प्री प्रोसेसिंग स्टेप. अब प्री प्रोसेसिंग में देखो कितने ऑप्शंस आपको गिवन है इसमें. आइदर यू कैन ओपन द फाइल्स डायरेक्टली विच आर अवेलेबल इन योर सिस्टम्स, right? This is the first option given. Either you can open any of the file which is available online, right? Either you can open any of the file which is available in any of the database in the Weka, or either you can generate your own data, right? Now how you will generate your data? Here the generators are given. I will actually this is not something which will be taught to you in the lab session, but yes, this is another feature of Weka you should know about. You can generate dataset as well, right? So when you click on the generate, a window will open here. This window is visible, data generator. Side by side you can also use at your systems as well.
Yes. So when you click on the generate option, you can able to see a data generator will open, right? So here when I go to choose, then there are many data generators are given. अब data generators इतने सारे क्यों दिए हैं मुझको, क्योंकि ये अलग अलग तरह का डेटा जनरेट करके देते हैं मुझको, ठीक है। अभी हम जिस डेटा सेट की बात कर रहे थे, जो हमने अभी जनरेट किया है, दैट इज योर आर, आई थिंक दैट इज योर random show the generated data set. You will go to choose, that is your RG. Yes. Uh, Ma'am, we need to choose random or I'm just telling you. When you are going to choose, these are some data sets given to you. According to the requirement, you can choose any one according to the requirement of which kind of data you want to generate. You can choose these data sets. अब ये आपको कैसे मतलब डेटा जनरेट करके देते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ. फॉर एग्जाम्पल आई हैड chosen this one data generator. When I click on that part, it will show me how much attributes I needed in my data. For example, I had selected 5 attributes, right? And this will also show you the number of examples that are the tuples, that for example I will select it 5. And also here you can give the name of the relation that shown in the file, that is a data set. You can set something here as well, correct? Click OK, right? Now when you click on this box, show generated data, it will show you which type of data it will generate. It is shown here, right? Which type of data it is, it will generate, right? So attributes are this. You had given, आपको क्या करके देगा, ये एक डमी डेटा जनरेट करके देगा, आपको चेंजेस खुद मैनुअली करने पड़ेंगे. The generator will generate the dummy data over here. You have to do the changes manually. So the data it is generating over here, the attributes it is taken are binary attributes. All are the binary attributes. तो अगर आपको सारे binary attributes चाहिए, you can generate the data over here. Are you getting? And yes, there is another option given. You can save this file and it will save into your system. अगर आपको इस फाइल को सेव करना है तो ये आपके सिस्टम में सेव होगी जब तक आप इसे सेव करोगे, राइट? अभी देखो, जब हमने जो हमने डेटा सेट ARFF फाइल फॉर्मेट में देखा है, उसकी बात करें, चूज, that is your BIOSNet. Yes, number of attributes I want 5, number of tuples I want, that would be 10, right? The number of arcs should be less than number of attributes. Relation name, for example, you are giving some data, so you can give the relation here, okay? And you can check, generate the data, you can find the values over here. So this is some kind of dummy they had generated. For example, I had saved that data, right? अब मैं इस डेटा को सेव करती हूँ. तो मैंने जैसे इस डेटा को सेव किया, just a minute, this is saving this file. Yeah, it will ask you where you want to save this data. For example, I am saving this data in documents, giving any of the name to the data set, right? Now save. This data set is saved. If I will see that data, let me show. I think the entire screen is visible now.
if I go to documents, then a data set here. I had saved this data right now, right? So if you can see that file, if you will open that file, अब देखो ये जो फाइल फॉर्मेट है वो ARFF फाइल फॉर्मेट है। अब या तो आप इसे नोटपैड में ओपन कर सकते हो, राइट, या आप इसे वेका में ओपन कर सकते हो। आर यू गेटिंग? फॉर एग्जाम्पल मैं इसे नोटपैड में ओपन करती हूँ अभी। Here. So you can see that आपने रिलेशन का नाम क्या दिया था? डेटा। वही आया है। This is the dummy they had created. This is the comments. You can remove these comments, right? This is the attribute. This is the name of the attribute. Now I will change this attribute according to my requirement. For example, I need a name. I will write a name, and name should be not nominal. It should be string, right? Other attribute I want, that is your marks, and it should be numeric. Another attribute, division. Now that should be TC1, TC2, TC3, right? So in these three divisions, I have to opt one value for any of the thing. Likewise, for the next attribute, I can take, for example, gender. That would be the binary attribute. The values would be male or female, correct? These are the attributes I had selected. Now there are two things you can do that. Either you can change the data over here in the file. जैसे कि अगर मैं मानो string की बात करूं, then XYZ, comma, what would be the numeric 67, TC1 and female. Correct. This is my first data. अब मैं इस फाइल को सेव कर रही हूँ अगर I had saved this file, and if I will open this file into the Veka, open file from documents, okay, I didn't save that file at ARFF extension. Now it is visible here. You can open that file. Now you can able to see. अब आप जब इस फाइल को ओपन करोगे, ठीक है, आपने देखा कि जो एट्रीब्यूट्स आपने एंटर किए हैं वो सब एट्रीब्यूट्स यहाँ आ रहे हैं, ठीक है। नाउ देयर वन अनदर ऑप्शन इज देयर. The screen is visible to you now? Anybody can speak? The screen is Yes, visible? ma'am. Yes, Okay. So if either you can enter the data over in the file. So जो आपने डेटा एंटर किया था, तो यहाँ से आपको सारा का सारा डेटा दिख रहा है, राइट? या तो आप डायरेक्टली नोटपैड में उसे जनरेट कर सकते हो, बट देयर वुड बी मोर चांसेस कि आपको कुछ एरर मिल जाए, और यहाँ से भी आप नया डेटा ऐड कर सकते हो. यू कैन ऐड इंस्टांसेस. इफ यू आर गोइंग टू ऐड, जो भी आपने नॉमिनल में सिलेक्ट किया होगा तो आपको देखो वही वैल्यूज मिलेंगी. यू कैन सिलेक्ट एनी वन फ्रॉम हियर. यू कैन ऐड. आर यू गेटिंग? In this way you can add, and यहाँ पे you can save the data.
राइट। सो डेटा कैसे एंटर करते हैं, अभी तक तो मैंने सिर्फ आपको उतना ही बताया कि आपको आपकी फाइल क्रिएट करनी है, मतलब यहाँ पे जनरेट करनी है, देन यू विल गोइंग टू यूज दैट डेटा। अब देखो, अगर मान लो मेरी ये जो फाइल है जो मैंने यहाँ पे सेव की है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर भूल गई हूँ अभी ये एंटर करना, और मैंने इसको सेव कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर इसको ओपन करके देख रही हूँ। I just want to open this file again. So it will show you some errors because the file is not correct. Are you getting? So it will show, जब भी आप अगर वहाँ पे कुछ भी फाइल बनाते हो, अगर उसमें कुछ एरर है, कुछ करेक्ट नहीं है, then it will not going to open this file. It will show you some kind of errors. So today task is you have to create your own data set. Either you will generate your dummy from here. आप यहाँ से dummy generate कर सकते हो, अपने system में save कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, you have to create your own data set, and your data set will contain 10 attributes and maximum 20 to 25 rows. The dataset will have 10 attributes and 25 tuples or 25 instances in your database. So the data should not be random. It should be meaningful, that you will able to analyze something. Analyze कैसे करते हैं उसके बाद बताती हूँ, पहले create करो data. Everybody is clear how to? Yes. Can you just repeat this step, because we can do it by side to you, because this went thoda fast, so we were not able to do it together. Okay. You just have to go first generate. Are you getting? Then you have to choose any of the generator you want. And if you had choose that generator, for example, I had choose that base that, then you can select here how many attributes you want. You can select how many tuples you want. Are you getting? Then name of the data. For example, आप student database बना रहे हो, right? Then you can give the name of the data here and okay. Then it will show you, जैसे आप show करोगे और फिर उसे जनरेट करोगे तभी वो आपको सेव का ऑप्शन दिखाएगा। डायरेक्टली जनरेट कर दोगे तो वेका में जनरेट कर देगा वो। आर यू गेटिंग? then save this file in your system. Yes, others are doing. One by one, show me your system so that I can able to see. Yes, Utsav, show me your system. Present your screen. Utsav, are you there? Yes, Roshni. कोई बात नहीं उत्सव, अभी नेट चल गया है ना, तो अभी कनेक्ट करो, अपनी स्क्रीन डिस्प्ले करो, मैं बताती हूँ क्या करना है। रोशनी, प्रेजेंट योर स्क्रीन। Yes, Utsav. Ma'am, this data we need to enter manually in Notepad file. Yes. Okay.
Yes. Go to Explorer. First one. First. Yes. Generate. Go to generate. There are 4 options available. Yes. Generate. Choose. You will choose BuySnet. Second one. Yes. Yes. Click on BuySnet. No, don't generate. Yes. Now here you will write number of attributes you want. And the fourth. Yes. Okay. Number of tuples in the next line. Yes. How many tuples you want? Okay. The relation name. Name of the data set. Okay. Okay. Click on OK. Yes. Now show. No, not generate. Show. Yes. Now generate. Save this file. इस विंडो को मिनिमाइज करो, इस विंडो को हाँ छोटा करो तब आपको सेव का ऑप्शन दिखेगा. अरे इसी को ही सबसे लास्ट में होगा. और कम करो. हाँ देयर. सेव करो, फाइल का नेम दो और एक्सटेंशन दो ARFF. ARFF. Okay. Now go there in at your. Yes. ओपन करो नोटपैड में. Yes. Now go and change the names of this attributes. जो भी अब आपको attributes रखने हैं, अब इस फाइल को create करो बैठकर. Ma'am, Yes, others. Yes. Yes. like the first attribute name is class, and then every attribute's name is node 1, node 2. Like, is there any difference between them, or they are just randomly named class and then? They had just randomly named class. क्या होती है वो मैं आपको भी बाद में बताऊंगी क्लासिफिकेशन के टाइम पे. Why they named as class. Okay. Yes. Yes, Utsav, you will stop presenting and do it. Yes, others. Yes, Roshni, where are you? Are you there in the class? Present your screen. So you don't have a laptop with you? Yes, Avi. Show me your screen.
Ma'am, in that generic object editor, there is one more place like a seed, like after relation name, then seed. What does it Mm-hmm. do? All the things you will let me know, I will let you know after some time. Just do it for now. Attributes and instances. Okay. बाकी लोग कर रहे हैं, बस बैठे ही हैं। और अभी तुम्हारे पास लैपटॉप में क्यों नहीं ज्वाइन किया तुमने? नेटवर्क इश्यूज? फोन में नेटवर्क इश्यूज नहीं है तुम्हारे? अभी अनम्यूट योरसेल्फ। नो प्रॉब्लम, अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, ma'am. Yes, if you are doing in your phone is working currently fine, right? Yes, So ma'am. you can connect your laptop with phone. What is the issue? मैम अभी अभी लाइट चली गई है इसलिए मैं डिस्कनेक्ट हो गया था अभी। What is the problem? तो लैपटॉप तो चल ही रहा होगा ना? हाँ हाँ अभी बैठ। Then you can show me. Take the picture and send me over WhatsApp. ओके Go. मैम। ओके मैम। Yes. Ma'am, in the first name, we need to add all the names of 25 people in line, and then at the rate data, we need to write the same in the form of serial number, first name, last name, like that only, Yes, right? yes, yes, yes. Okay.
Firstly, this is your experiment number 3 that you have to create the data set in Weka. So for now, you have to just create a data set and open in the Weka. Ma'am, are the names case sensitive? Like if we have added in values capital and in the data set we write it in small, will it affect each other or not? Or it will be considered as one or different? Which one? In values? Whatever the values you had given in the attribute, Like then this suppose, is the only. Yes. like at the rate attribute first name, I write capital H, then double ER in small. So in data, if I by mistake I've written a small h double ER, then it will be considered different or same. No, no. If what I'm saying, listen to me. If you are talking about the nominal attributes, and in this you had given some of the values, then it should be same. But other values you are writing in any of the sense, it would be okay. Okay, ma'am. Show me, Akshay. Present your screen. Yes. Show me your file. In text editor. Have you saved this file? हाँ तो ये जो आपने डेटा लिखा, लिसन, शो मी द फाइल. डेटा में कोमास नहीं लगाया आपने. And in the last you had 4 attributes, the values are 3. Ma'am, the fourth one is class, na? The class attributes, what are the values for that attribute? Bache, don't be confused over the dummy data. The class, I will let you know what the class mean here. The class is nothing else, it is also attribute here. So whenever you are defining this attribute, you have to give the data type as well. Class, if you are the name of the attribute is class, what should be the data type? Are you getting? तो No, क्लास ma'am. का डेटा, बच्चे क्लास भी तो एक एट्रीब्यूट है ना. तो जैसे आपने बाकी एट्रीब्यूट्स लिखे हैं, जैसे कि जेंडर लिखा है तो आपने क्या लिखा है, मेल फीमेल. नेम लिखा है तो डेटा टाइप क्या लिखा है, स्ट्रिंग. वैसे ही क्लास का डेटा टाइप क्या है? इफ अ क्लास इज एट्रीब्यूट, व्हाट इज द डेटा टाइप? क्लास हियर रेफर्स टू. क्या बोल रहे हो क्वेश्चन? जैसे आपने 4 एट्रीब्यूट्स लिखे हैं ना फाइल में. पहला एट्रीब्यूट लिखा है नेम, उसका डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग. मतलब नेम क्या है, कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है. दूसरा एट्रीब्यूट लिखा है डिवीजन. डिवीजन आपने 2 लिए हैं, TC2 और TC1, राइट. ऐसे ही आपने तीसरा एट्रीब्यूट लिया है जेंडर. जेंडर क्या हो सकता है, मेल आइदर फीमेल. चौथा एट्रीब्यूट लिया है क्लास. क्लास का डेटा टाइप क्या है, डेटा वन इज नॉट अ डेटा टाइप. Okay, ma'am. I thought file का name वो class का name बोल रहे. नो 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 नो, ऐसा कुछ नहीं है. डोंट बी कंफ्यूज विद क्लास. क्लास इज ऑल्सो एट्रीब्यूट. दैट वुड बी द रिलेशन. आपको ऊपर देना है रिलेशन. हाँ ऊपर जो दिया, ठीक है, करेक्ट. क्लास में क्लास इज एट्रीब्यूट, otherwise delete this attribute. If you are considering 3 attributes, then it would be okay. Now you will save this file and open in Weka. Okay. Yes. Here, show me your one as well.
Yes. Show me the file. Show me the file. Oh, yeah. Yes. Yes. So you are using. Okay. Firstly, what you have to do is in the first line @relation enter that uh, relation part. क्योंकि आपका वो जो पार्ट है वो कमेंट सेक्शन में ही इंक्लूड हो गया है. Okay. Yes. Now everything you had given. No. आपने जो डेटा लिखा है तो Okay. first data is 1, he, last name and enrollment number 170, and the next line comes to the next enter there, not in the one line. The first row पहली लाइन का मतलब जो first row है, जो 4 आपने attributes रखा है, उसके बाद the second row, then third row, fourth row. Correct? Okay, like this. Yeah. Okay. Now save this file. Save that file and then open that. Yes, ma'am, I saved it. Okay, now open that file. Bache, go at the open file and use that. Because this is the first file it is taken. Okay, ma'am. Click on open file. I'll keyword relation expected. Line 3. Where is your file? Show me your file first. Where it is saved. Close other windows of Weka. And locus D. Yeah. Okay. This is what it is showing the exception. Again, @relation. But you had corrected that exception. Show me that file. Oh, I didn't get you, ma'am. Can you repeat it? What I'm saying, if you are able to see that, it is showing one of the exception, that is keyword @relation is expected, and you had already corrected that, right? It corrected that. Save this. Where कहाँ save किया आपने ये file? Local D, ma'am. Okay. In here. Okay. Now open this file over there. Which file you are opening? Go and open the file only, not the folder. I have, ma'am, opened the file only. Studentinfo.arff is the file only. Click OK over there. Yes. Open file. Yes. Select it. Yes. Open. Like, Unable to opened determine it. structure of this file.
Have you saved this file .arff? Just a minute. Just Yes, a minute. ma'am. Your data is correct. Okay, go to your file. Do one thing more. Go to your file. Yes. Open that file. This is the thing you can also do. Yes. Remove the first line. That is the comment section. Okay. Yes. Remove that. Now save this file. Check once every spelling is correct. Relation, attribute, everywhere. Yes, ma'am. It's correct. Okay. Yes. Then save this file and now try. Again, it is showing the same error. Yes. Relation expected read token at the rate attribute in line number 3. What it is expecting here. A reason unable to determine structure as ARFF. Keyword at the rate relation expected. Relation is already given. Okay, send this file to me. This file you had saved here. Email this file to Okay, me. ma'am. Yes, I'll check. Yes, ma'am. Okay. Yes, others are doing. Show me whatever you had done. Kinjal, Jamin. Yes, Kinjal. Show me your screen. अभी तक डेटा सेट नहीं बनाया आपने?
Okay, do it. Yes, Jamin, यस मैम। are you doing? Show me your screen. मैम वो इनको जो एरर आ रही थी ना वही सेम एरर आ रही है। हाँ, दिखाओ तुम मुझे, कोई बात नहीं। ओके मैम। बच्चे रिलेशन को तो आपने कमेंट कर रखा है। फाइल ओपन करो, रिलेशन को नीचे लिखो @रिलेशन। हाँ, तो नाम दो कुछ, बेकार डाटा जनरेटर ये सब हटा के। Now it is working. ओके, मैंने आप लोगों को 10 एट्रीब्यूट्स और 25 रोज क्रिएट करने को कहा है, तो डू इट। Yes, Parth, show me your screen.
Parth, show me your screen. Namish, show me your screen. Here I had just checked your file. Actually, you had not saved your file in ARFF format. That's why it is not opening over there. But ma'am, It is working the file format is showing here. ARFF. Like It the, is like what? I'll do it again. Change the extension .arff and then open in the Veka. The file is correct and it is working. Okay, ma'am. Yes, नमिश क्या किया है अब तक? फाइल कहाँ क्रिएट की है? बोलो. हेलो मैम, Yes. मैम एरर आ रही है। आप क्या कर रहे हो ये? डेटा सेट बना लिया मैंने, दिखाओ मुझे. लेकिन एरर आ रही है। दिखाओ तो. फाइल दिखाओ. ये रही मैम। नोटपैड में ओपन करो ना. ये रही नोटपैड में ओपन। नोटपैड में ओपन करो और दिखाओ मुझे. क्या हुआ? एक मिनट। At the rate relation dataset attribute name. सारे नॉमिनल क्यों रख दिए? एनरोलमेंट नंबर न्यूमेरिक रखो. ओपन करो. नहीं हो रही है। यही फाइल है जो ओपन की है तुमने? हाँ यही है। इनवैलिड enumeration नो वैलिड टाइप ऑफ. फाइल दिखाओ. Hamish, Avi और मीत 21, 3 और 10. एनरोलमेंट नंबर या तो एक साथ करो या उसके अंदर अंडरस्कोर यूज करो. कहाँ पे मैम? एनरोलमेंट नंबर
ये नहीं कैसे? इसमें नहीं नेम ऑफ आपने एनरोलमेंट नंबर लिखा है ना, एक तो उसके हाँ। साथ फुल स्टॉप नहीं आएगा। हाँ, डोंट यूज फुल स्टॉप देयर। यस, एंड व्हाई आर यू ओके। यूजिंग दिस वैल्यूज? आप न्यूमेरिक लिखो ना यहाँ पर डेटा टाइप में, ये सारी तीनों वैल्यूज हटा दो, 21, 3 और 10। सिर्फ न्यूमेरिक लिखो, ये सारा हटा दो ब्रैकेट्स। अरे ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखने के लिखना 3 बार। है, सिर्फ न्यूमेरिक लिखना है। दिस इज अ न्यूमेरिक डेटा टाइप। और न्यूमेरिक भी ब्रैकेट्स में नहीं लिखना है, ऐसे ना? ऐसे लाइन लिखो, एन वुड बी कैपिटल। हाँ किया मैंने। Yes. Yes. Anyone else who is getting error? Done, Kinjal? Utsav is saying, ma'am, I open the NFI file in Weka and I don't get the error. So then what I have to do? Can I? Utsav, yes. For today, this is the only thing this is your third practical. You will create you will generate the data set in the Weka. How you will able to? Now you are getting how you can generate your own data sets. Done. Avi is done. Kinjal is done. Heat is done. Okay, great. Others, बाकी क्या कर रहे हैं भाई? अतुल, साहिल, पूर्वी, Ma'am, in practical file, what we need to add? Like the screenshots or the data we need to paste or what? screenshot step by step how you will generate the data set. जो आपने Okay. data set generate किया है, step by step you will show that how you will. Can't for now, but I will do it later today. Okay, but make sure you will do that, Sahil. Yes, Atul. Atul, Shivam, Nancy, show me. If you are getting error, then show me, na. I am asking to show. You people are not asking me. Yes, this is what you had created a file successfully and it is open in your Explorer in Weka. Then you had created your file successfully. This is the today's task only. After that, what you have to do that I'll tell you in the next lab session. Is it clear, Utsav? Me also do that because I forgot some steps. But this is not fair, na. If I'm here, then you should ask me. At the end, you are saying that. Okay, so whosoever is done, that is very good. Others who are not able to do any of the reason, yes, Utsav, show it. Show me. I'll check. Whosoever is not done with any of the reason, either technical or personal reasons, then make sure you will do it by today. You will try it by today, right? And if you are facing any of the difficulty, then please send me over the emails. Yes, correct. Ma'am, So, and this is the second practical, third practical I had given you. So make sure you will create the data of 10 attributes and 20 rows. Create it as I said. Okay? Yes, he. ma'am, and then we go in Mecca, we go to edit. So the from edit we are not able to add. You can add there at the last. You will the add instances there. You will add instances. The From data where? would be there. अच्छा edit पे जाओ.
Utsav, go to edit. Yes, there at the right end, add instance. You can add multiple rows, Okay, okay, got it. as many as you want, and click OK. Okay. Any other doubt anyone have? So with that, we will just close our session. And whosoever is not done with this, any of the reason you had, please make sure you will do it by today. Just try it once, okay? Okay. So with that, we are. Yes, Namish. So with that, we had completed with 3 practicals. In the format, I had given the list of practicals as well. Check over there. And make sure by today you will upload the 2 practicals, right? And third one, I am giving you the 1 week time because it is completed today in lab session. So by next week, you will able to upload third one. But otherwise, 2 would be uploaded by today only, everyone. And ma'am, we need to create a separate Word files for each practical, or we have to keep adding it in the existing Word file. You will just no. If you are comfortable to create another Word file, then you can do that. If you will change, keep modifying the current one, then it is okay with me. This is your comfort. Okay. Yeah. So with this, we are closing our session, and I hope you will do your work within the deadline, right?